Hello, students. I welcome you all back after your tests, and I hope you all did well in your tests. Okay, students, so we are starting back our sessions now, and in today's session, we are going to take up your chapter that is Unit 4, then Section C, that is When the Fish Laughed. Now, students, it is a play, and since we all are at home, so we'll not be able to enact it. But yes, I'll try to make it as interesting as possible. And before I proceed further, I would like to tell you that it's going to be in two parts. Okay, this play I'll be divided into two parts. So this is with video 1, and in the video 2 you'll be again listening to the continuation of the same play, as it is going to be lengthy. Okay, so yes, so first and the foremost thing, as you can see on the top, there are few words which are related to this chapter, which you must know. Okay, so for example, it is a tradition of every region to have stories that are passed down through generations. Name these stories forms with the help of the hints. Now there are a lot of stories, and we have stories in our culture as well. Okay, so each culture basically has a story. Now those stories are actually divided into three parts. For example, the first one is myth. What is a myth? A tale explaining the origins of the world of or people. Okay, so it's something, a story which talks about the people, or in general about the world. And this may be true, this might not be true, it can be a belief, just people who are following. Fable, a tale with moral or lesson to be learned. So fable is a kind of a story which has a moral, so that's called a fable. Folk tale, a tale about an extraordinary occurrence in everyday life of a person. So that is called a folk tale. That folk tale is basically generally about common people, about any common people like you or me. Okay, and it might have a moral or not. Fable has a moral. Myth is just a belief. Okay, so let's carry on. Now, first, let us look at the characters of the play. So we have the king, who is the ruler of the kingdom in the valley of Kashmir. So this, students, basically it is a folk tale, and it is a folk tale. It's a folk tale taken from Kashmir. Okay, queen is there, his newly wed wife. There is Wazir, the chief minister of the kingdom. Amir, that is who's Wazir's son. Bhaskar, a well-to-do farmer living in the same valley. Shivani is Bhaskar's daughter. Hina is one of the queen's maid or the queen's servant. Servant, Bhaskar's servant. And there's one fisherwoman. Okay, so let's begin the play. Now in the scene 1, what we are going to be reading is, the queen, attended by her maids, is sitting in an enclosed balcony of her palace, amusing herself by watching people carrying their wares to the town market. She hears a raucous cry of the fishermen, okay, and instructs Hina to buy some fish from the women. Now here, raucous means that is a loud noise, a loud sound. Okay, yes, of the fisherwoman. Okay, students, so now this is the first scene where the queen is sitting with her maids, and वो एक अपनी मेड को कह रही है कि जाओ वहाँ उस फिशर वुमेन से कुछ फिशेस खरीद के ले आओ. सो वो अपनी मेड हिना को कहती है फिशेस लाने के लिए. सो लेट्स प्रोसीड विद द डायलॉग. हिना, queen. Hina, buy that big silver fish. Oh wait, is it a male or a female fish? Fisherwoman, it is a male fish, your majesty. Queen, disappointedly, oh, I can't eat it then. Hina, why yes, of course, we allow no male apart from the king himself to enter her majesty's palace. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये थोड़ी सी ऑकवर्ड है. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब क्वीन उसे कह रही है कि जाओ एक फ़िश ख़रीद के लेके आओ, तो क्वीन पूछती है उसे कि ये भी पता करो कि वो फ़िश मेल है कि फ़ीमेल है. तो फिश वुमेन कहती है कि येस, वो एक मेल फ़िश है. सो क्वीन कहती है नहीं, फिर मैं इसे नहीं खा सकती हूँ. फिर उसकी हिना सर्वेंट कहती है कि येस, इसे हम नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी मेल अलाउड नहीं है except for the king.
सिर्फ किंग ही क्वीन के पैलेस में जा सकते हैं. Right then a loud laughter is heard. Everyone looks around at each other, looking for the source of the laughter. अचानक से कुछ हंसने की आवाज़ आती है एंड अब ये पता कराने की कोशिश की जाती है कि हंस कौन रहा है. Okay students, so I am moving on to the next page, page 78. We have finished page 78. Now we are moving on to page 79. Fisherwoman. With wide open eyes, the fish is laughing. Everybody looks into the basket, and indeed a fish is leaping about with its mouth open. Queen flushed with anger. How dare you? Guards, guards. 2 guards from the front gate of the palace approached the balcony. Get hold of that woman. Tie her up. The frightened fisherwoman leaves behind her basket and starts running up the road as fast as her legs can carry her. Meanwhile, the queen angrily marches off into her bedroom. So यहाँ पे क्या होता है, अचानक से जो फिशर वुमेन है वो कहती ओह देखो फिश हंस रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, विल गेट टू नो लेटर ऑन इन द चैप्टर एक्चुअली ये चीज़ क्या है, द फिश इज़ लाफिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है. सो क्वीन इतने में गुस्सा हो जाती है और वो गार्ड्स को ऑर्डर करती है कि गार्ड्स जाओ उसको उस फिशर वुमेन को पकड़ के लेके आओ. एंड ये कहते हुए वो जो लेडी है फिशर वुमेन वो बेचारी डर के भाग जाती है. एंड क्वीन गेट्स मोर एंग्री एंड शी गोज अवे इन टू हर बेडरूम. नाउ वी आर इन टू द सीन 2 एंड सीन 2 what we see is inside the queen's bedroom. Queen. How dare a fish laughs at me? Maids, draw the curtains and leave me alone. I will not see anyone. I inform the king that I am angry, a mere fish. So queen order करती है कि मुझे कोई भी ना आके मिले और मैं बहुत गुस्से में हूँ एंड जाके वो किंग को भी बता दो. The maid draws the curtains, heavy curtains and leaves her. The room is dark. After a while the king enters hurriedly. So room बहुत dark था और अचानक से वहाँ पे अब king आते हैं वहाँ पे. King very lovingly, what is it my dear? Who has dared to offend you? Offend you का मतलब यहाँ पे है कि किसने हिम्मत की है तुमसे क्वेश्चन करने की. Queen tearfully, my husband, I have always been honored in my dear father's kingdom. Never in my all life have I faced such humiliation. Humiliation का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे to be insulted. A mere fish laughed at me in public. King with a confusion and doubt. A fish laughed at you? What do you mean? Queen with rising anger. अब क्वीन और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है बिकॉज किंग उसको बिलीव नहीं कर रहा है. डोंट यू बिलीव मी? इफ़ यू थिंक आई एम लाइंग आई विल लीव एट वंस फॉर माई डियर फादर्स हाउस. अब क्वीन यहाँ पे वार्न करती है किंग को कि ठीक है अगर तुम मुझे इफ़ यू डोंट बिलीव मी, तुम मुझे बिलीव नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आई एम गोइंग टू मैं अपने फादर के घर चली जाती हूँ. किंग कंसोलिंगली मीन्स उसको शांत करते हुए. नो माई डियर, I do believe you. Don't be angry. Wipe away these tears. Your tears give me more pain than they give you. Give me few days and I will punish whoever is responsible for this offense. Offense का students यहाँ पे meaning होता है the mistake, okay, that is being committed. So king उसको शांत करके queen को शांत करके कहता है कि yes please don't say this. रो मत, मुझे तुम्हारी रोने से और परेशानी होती है. So yes, मुझे कुछ दिन दो एंड मैं पनिश कर दूँगा उसको जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी ये बैड चीज़ की है. द किंग लीव्स द क्वींस बेडरूम. सो नाउ लेट्स गो ओवर टू द नेक्स्ट पेज नंबर 80. So yes students, now we are on page 80. Now we have come to the scene 3. Let's see what is happening in scene 3. So inside the Wazir's home, the Wazir is sitting with his head in his hands. His son Amir enters. Amir with a great concern. Father, what is the matter? Are you ill? Wazir. No, but soon I will be dead. Amir. What an inauspicious thing to say. Inauspicious का students मतलब होता है unlucky. Auspicious का मतलब होता है lucky. Inauspicious means unlucky. Father,
Did anybody hurt you? Tell me and I will help you. Wazir, you can't, Amir. It is the king. He will have me killed if I cannot get to the bottom of a strange incident that occurred at the Queen's palace today. सो वज़ीर अपने बेटे को समझाता है कि नहीं, मुझे किंग ही पनिश कर देंगे, मुझे किंग मार डालेंगे अगर मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाला. एक इंसिडेंट है, एक वाक़या हुआ है क्वीन के पैलेस में और मुझे उसको सॉल्व करना है. आमिर, व्हाट हैपेंड? टेल मी एवरीथिंग. वज़ीर, दिस मॉर्निंग एज द क्वीन वाज बाइंग फिश फ्रॉम अ वुमन, a fish started laughing at the queen. Amir, disbelieving me. What? A fish laughed at the queen? How is that possible? Wazir, possible or not, the king is certainly out of his mind. He has given me a week's time to find out the reason behind the laughter of the fish. If I am not able to do so, he will surely have me killed. I have absolutely no idea what to do. सो किंग अब आमिर भी उसे बिलीव नहीं कर रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि फ़िश लाफ करे. सो वज़ीर कहता है कि पॉसिबल हो या ना हो, बट येस माई लाइफ इज़ इन डेंजर. अगर मैंने किंग ने मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दिया है और अगर 1 हफ़्ते के बीच में मैंने ये रीज़न नहीं फाइंड आउट किया कि फ़िश क्यों हंस रही थी क्वीन पर, सो येस डेफिनेटली किंग मुझे मार डालेगा. अमीर इज़ साइलेंट फॉर सम टाइम, stroking the beard of his handsome face. Amir, father, rest assured, I will surely find a solution to your problem. So Amir अपने फादर को तसल्ली दे रहा है. रेस्ट एश्योर्ड मीन्स तसल्ली दे रहा है, डोंट वरी कि मैं बहुत जल्द इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल दूंगा आपके लिए. वज़ीर, ऑल राइट माई सन, दो आई डू नॉट हैव मच होप, this may probably be the last time that we two stand in each other's company. So father ये कह रहा है कि yes, मुझे कुछ खास होप तो नहीं है, बट yes, ये शायद लास्ट टाइम होगा कि हम दोनों इकट्ठे ऐसे बातें कर रहे हैं. फादर एंड सन एम्ब्रेस, मतलब वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं. नाउ वी गोइंग टू द सीन 4. नाउ सीन 4 में क्या हो रहा है? अ बिग वार्म किचन इन द फार्मर्स हाउस. It is afternoon. The farmer's young and comely daughter is serving lunch to her father, who is sitting on a low flat stool with a little table in front of him. Yes, now here comely means very attractive and very young looking daughter. ठीक है. So as you can see in the picture, we can see scene 4, जैसे वहाँ पे farmer बैठा हुआ है. Okay, Bhaskar. The name of the farmer is Bhaskar. So students, in scene 3, let me do a quick recap. In scene 1, there were 2 characters. There were 3 characters: Queen, Fisherwoman, and Fisherwoman and Hina. Scene 2 हमने देखा, scene 2 हमने पढ़ा था Queen and King के बीच में. Okay. सीन 3 में हमारे पास अगले 2 कैरेक्टर्स आते हैं, आमिर एंड वज़ीर. ठीक है. वज़ीर इज़ द ऑफिसर इन द किंग्स कोर्ट. ओके. अब सीन 4 में वी आर गोइंग टू द फार्मर्स सीन. यहाँ पे फार्मर इसकी डॉटर का सीन है. सो Bhaskar इज़ द नेम ऑफ द फार्मर. शिवानी, टुडे while returning home from town I met a strange young man on the way. सो Bhaskar अपनी डॉटर को कह रहा है कि मुझे एक बड़ा अजीब सा इंसान दिखा था रास्ते में. शिवानी, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज 81. ओके. सो या पिक्चर यू कैन सी. सो वी कैन सी शिवानी सिटिंग विद हर फादर. एंड शिवानी, वाई डू यू कॉल हिम स्ट्रेंज फादर? Bhaskar, he would ever so often speak in a manner that I could not make head or tail of it. सो उसका फादर कह रहा है शिवानी को कि यस, वो बड़ी अजीब ढंग से बात कर रहा था एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का मतलब क्या निकल रहा था. फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक व्हेन आई इन्वाइटेड हिम होम, ही आस्क्ड मी इफ़ द बीम्स ऑफ आवर हाउस वर स्ट्रॉन्ग इनफ. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीम्स का मतलब होता है, बीम्स एक्चुअली सीलिंग को सपोर्ट करने के लिए रॉड्स या आई वुड से बैम्बू स्टिक्स होते हैं बेसिकली, दैट इज़ टू सपोर्ट द सीलिंग ऑफ द हाउस. उन्हें हम बीम्स कहते हैं. ओके. सो वो स्ट्रेंजर से पूछ रहा था भास्कर को कि क्या आपका जो हाउस है उसके बीम्स स्ट्रॉन्ग हैं.
Now, wouldn't you call that strange? So क्या तुम इसे strange नहीं कहोगी? Okay, students. So I end my video 1 here. Don't okay, and don't go away. I'll be continuing the rest of the play in the second video. So join me soon.